Dear students, today we are going to study about the subject called Business Ethics and Corporate Governance. Tybfm Semester 5. This is the paper, and as I told you, the first module in the business ethics is the module number 1, Business Ethics. This is a lecture number 1. Today is 18 June 2020 at 6 p.m. The main objective of learning this lesson is meaning and definition of ethics, meaning and definition of business ethics, and importance of the business ethics. Okay. Now, what is the syllabus of this particular paper? The syllabus of this particular paper is module number 1, Business Ethics, module number 2, Corporate Governance, module number 3, Corporate Governance and Shareholders' Rights, and module number 4 is Corporate Governance Forums and Legislative Framework of Corporate Governance in India. That is what the subject matter we need to understand. Now, for understanding the ethic, we have to deal with certain examples and points. Ethic is a mass of moral principle or set of values about what is right or wrong, what is true or false, what is fair or unfair, what is proper or improper, what is right is ethical and what is wrong is unethical. In simple word, what is right is ethical and what is wrong is unethical. As a human being, it is our responsibility to behave ethically, fairly, truly, and properly. If we will behave unethically, definitely we have to pay a huge loss, huge problem for that. We have to face a huge loss for that. So, dear students, in business also, whenever we are dealing with the people, we need to be very, very ethical. That's why the term ethics refers to a code of conduct that guides an individual while dealing with others. The term ethic refers to a code of conduct that guides an individual while dealing with other. दूसरों के साथ डील करते वक्त हमें कैसे बिहेव करना है, दूसरों के साथ डील करने के बाद कैसा हमारा कंडक्ट होना चाहिए, उसी का मतलब होता है एथिक. That's why ethic is nothing but what is good and what is bad. Ethic is a difference between what is good and what is bad. Dear students, when we study the business ethics, hello, can you hear me properly? Yes, can you hear me? Say yes or no in the chat box. Yes, good. So, yeah, good. So, now we'll start with the next slide. Now, definition of ethics. Dear student, now concentrate over here. According to Peter Drucker, there is only one ethic, one set of rules of morality, one code that the that of individual behavior in which the same rules apply to everyone alike. Try to understand. There is only one rule for the ethic. There is a one set of rule for morality. There is no any other way. Just we have to do good for other means good for other. हमें किसी और के साथ सही रहना है मतलब सही रहना है. आज जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे चांस आते हैं, मौका मिलता है कि हम किसी और को फंसा के उसमें बिजनेस में आगे बढ़े. बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, हम हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल रखें, हम हमारे बिजनेस में पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा कोई काम ना करें कि जिंदगी भर आगे हमारे से कोई दूसरा बिजनेस करने को तैयार ना हो या हमारा मार्केट के अंदर रेपुटेशन खराब हो. सो देयर इज अ मोरालिटी, देयर इज एन एथिक, there is a code of conduct, there is a way of behavior, there is a system in which we deal with the society, we deal with the people. So the another definition says, according to the Philip Wright, ethics is a branch of philosophy which is the systematic study of selective choice of the standards of right and wrong, and by which it may ultimately be directed. So ethic is a branch of philosophy. Philosophy is nothing but the way of thinking, the way of understanding a particular situation, which is a systematic study of a particular selective choice of the standard of what? Of right and wrong. क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच का जो रास्ता निकलना है, इसी को कहा जाता है ethic, and by which it may ultimately be directed. हमें सही और गलत के बीच की अंदर से रास्ता निकाल के हमें डायरेक्ट करना है अपने आप को.
Module 1 business ethics. Module 1 business ethics. Now we have to understand what is business ethic. Ethic we understood what is good and what is bad, what is right and what is wrong, what is noble and what is ignoble. We have to understand module 1 what is business ethic. Now we have to apply the ethic in the business. We have to apply the ethics in the business. That is what business ethic is all about. The primary. Now to understand the business ethics, ये तीन स्टेटमेंट आपको बराबर से समझना है. To understand the business ethics, ये तीन स्टेटमेंट आपको बराबर से समझना है. The number one, the primary aim of business is not to. The primary aim of the business is not to earn but to serve the people. The primary aim of business is not to earn but to serve the people, the customer and society large to fulfill their needs. The most important thing is a business ethic. You need to understand is that you are not just think about the profit. You must think about the customer. You must think about the society in large, and you must try to fulfill the needs of the society. Until and unless you will not think for the society will not think for you. If you want to develop your image in the market, you have to deal with the people in such a way that people should respect you, people should believe you, people should trust you, and people will believe you only, people will respect you only, and people will trust you only and only if you behave ethically. So try to understand how much ethic is important. Try to understand how much ethic is necessary. So, dear students, very importantly, we have to understand the first important part in the business ethic is that we have to understand the society and we have to understand the customer. The second point says, if your client has a problem with ethics, try to understand. अगर आपके client को ethically नहीं रहना है, a signed contract may not be enough to protect you from expensive litigation. तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके साथ वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है. अगर आप लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो ऐसे पार्टी के साथ किया है जो पार्टी इलीगल काम करती है, गलत काम करती है, तो आपको वो बहुत महंगा पड़ सकता है. Those who climb the corporate ladder, try to understand the third point. Those who climb the corporate ladder of lies and deception will sooner or later fall off the shaky steps. Those who climb the corporate ladder of lies and deception will sooner or later fall off the shaky steps. अगर आप ऐसा corporate ladder ट्राई कर रहे हो जिसपे सिर्फ झूठ है, गलत है, धोखा है, तो आगे जाके आप तुरंत इस बिजनेस से गिर सकते हो. ये तीन चीजों से हमें समझ में आता है कि बिजनेस में एथिक क्यों जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड. Meaning and definition of business ethics. Business ethics are the application of general ethical rules to business behavior. ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, एक जनरल एथिकल रूल है. क्या सही है क्या गलत है उतना ही अपने को सोचना है. सही है वो करना है, गलत है वो छोड़ देना है. अगर आप इतना काम करते हो तो भी आप बिजनेस एथिक को फॉलो करते हो. Another definition says business ethics or ethical standards are the principles. Principles are nothing but the rules, practices, and philosophies. Philosophies, सोचने का तरीका that guides the business people in the today's business decision. जो गाइड करता है बिजनेस पीपल को आज के जमाने में बिजनेस डिसीजन कैसे लिया जाए. So business ethical or ethical standards are the principles, rules, practices, and philosophies that guide the business people in the today's business decision. दोस्तों, when we speak about the importance of the business ethics, number one, अगर आप business ethics को follow करते हो, the business ethic brings पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. एक अच्छा पॉजिटिव वातावरण निर्माण करता है. अगर आप बिजनेस एथिक को फॉलो करते हो तो आपके पास बहुत सारे नए बिजनेस आने के चांसेस बढ़ता है क्योंकि हर एक कंपनी अच्छे लोगों से बिजनेस करना चाहती है. बिजनेस एथिक हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुडविल. इट हेल्प्स इन द क्रिएटिंग अ गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन. आपका भी गुडविल बढ़ेगा, आपके बिजनेस का भी गुडविल बढ़ेगा. बिजनेस ethic helps in protection of both the sides, business also and people who are connected with the business also. सबको connect करता है, साथ में लेके चलता है. Protection to both the side. Then
क्रिएट्स द सेल्फ सेटिस्फेक्शन। किसी से अच्छा बिजनेस करना, बिजनेस एथिक को फॉलो करना, किसी के साथ प्योर डील करना, जरा भी उसमें कोई मिलावट नहीं है, ना किसी को हमने कोई गलत प्रोडक्ट बेचा है, ना किसी के साथ हमने कोई चीटिंग की है। ये सब अगर हम ध्यान से करते हैं तो हमें भी सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने एक अच्छा बिजनेस किया है। अच्छे बिजनेस एथिक को सही तरीके से फॉलो करने से सक्सेस आता है, डेवलपमेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम एथिक को फॉलो करते हैं तो मैल प्रैक्टिसेस दूर होती है। ब्राइबरी, मिलावट, किसी को फंसाना, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत देके काम करना, ये सारी चीजों से मुक्त एक अच्छा बिजनेस होता है। चाहे इसमें सफलता थोड़ी लेट मिलेगी, थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, लेकिन जब वो सफलता मिलेगी वो आपको एक अच्छी और बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। बिजनेस एथिक हेल्प्स इन इंप्रूव द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, पुशअप करता है, आगे बढ़ाता है। एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। लॉन्ग टर्म बिजनेस को टिकने के लिए बिजनेस एथिक, मैंने अभी आपको बताया, आप एक बार किसी को फंसा सकते हो, दो बार किसी को फंसा सकते हो, जिंदगी भर में फंसा सकते हो। जिंदगी भर आपको उसको आपके साथ में रखना है तो आपको उस, उसके साथ अच्छे से बिजनेस करना पड़ेगा। सॉरी, अगर आपको उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको उसके साथ अच्छा टर्म्स से बिजनेस करना पड़ेगा। दोस्तों, एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है? एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अपने कस्टमर के सारे अधिकार को महत्व दे, सेफगार्डिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट, जैसे राइट टू चॉइस, राइट टू हर्ड, राइट टू रिड्रेस, ये सारे सारे कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स, क्वेरीज, डाउट्स, प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो सॉल्व करके दे, ना कि उसको अगेंस्ट में जाए, उसको फेवर में आए। हमें अच्छा बिजनेस करना है, हमें किसी को फंसाना नहीं है, तो हम क्यों कंज्यूमर को अपने अधिकार ना दे। देन it helps in protecting the consumer, it helps in protecting the employees। हर एक कंपनी के एम्प्लॉय के साथ भी न्याय होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स है, हमारे कंपनी के असली मालिक है, उन लोगों तक हम अच्छे से पहुंच पाते हैं। It helps in developing a good relations, it creates a good corporate image। अच्छा बिजनेस अच्छा इमेज बताता है। आपका बिजनेस करने का तरीका लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है, आपकी तरफ देखने का लोगों का नजरिया वो बिजनेस करने के तरीके से बनता है, बिगड़ता है। अगर आप अच्छे से बिजनेस करते हो, पॉजिटिवली बिजनेस करते हो, हेल्पिंग नेचर में बिजनेस करते हो, तो आप एक अच्छा इमेज क्रिएट कर पाओगे। अगर आप लोगों को फंसाने का काम करते हो, अगर आप लोगों को चीट करते हो, अपना फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हो, तो आपका इमेज जो है वो पूरा मार्केट में स्पॉइल हो जाएगा। अगर किसी से लड़ना है तो किसी का छोटा दिखा के या उसके बिजनेस को बुरा बता के उससे कंपटीशन मत करो। उससे कंपटीशन करना है तो उसको उसके प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट बना के अपने आप को बेहतर साबित करके आपको कंपटीशन करना है, तो इसे कहा जाता है हेल्दी कंपटीशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि एथिक अगर हम फॉलो करते हैं तो बिजनेस में हमें कितने सारे फायदे मिलते हैं। अगर यहीं पे हम लोग अगर बिजनेस एथिक फॉलो नहीं करेंगे तो कभी हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, कभी हमारा इमेज नहीं बढ़ेगा, कभी अच्छा रिलेशन बना नहीं पाएंगे, हमारे कस्टमर, हमारे एम्प्लॉय, हमारे शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, कस्टमर को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, हम लॉन्ग टर्म तक टिक भी नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम हम कभी हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाएंगे, हमारे बिजनेस में मेल प्रैक्टिसेस बढ़ेगी, हमारा सक्सेस रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, कभी अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम हमारे गुडविल को बहुत ही धक्का बैठेगा, अवर गुडविल विल गो डाउन, एंड कभी भी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हम लोगों ने आज के सेशन में क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान दी। डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। देन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट आर द सिलेबस ऑफ the business ethic textbook. We have to study, these are the 4 modules given in the syllabus, we have to study that, then we will go one by one. Then we understood meaning of ethics, हमने इसके मीनिंग के बारे में समझा, what is good, what is bad, what is right, what is not right, what is to be done, what is not to be done, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, how to behave in any situation, ये सारी चीजें हमने एथिक के मीनिंग के अंदर पढ़ी। देन हमने एथिक के बारे में डेफिनेशन भी देखा, गिवन बाय पीटर ट्रकर एंड फिलिप राइट, जिन्होंने बताया कि मॉरलिटी के बारे में क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे परफॉर्म करना होता है। एट द सेम टाइम वी आल्सो अंडरस्टूड व्हाट आर द स्टैंडर्ड
वैसा हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट रेडी करना है बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। That we also understood. Then we understood about the business ethics. इसमें 3 स्टेटमेंट से हमने समझा कि हर एक बिजनेस का प्राइमरी एम, मेन एम क्या होता है, इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द पीपल, द कस्टमर, द सोसाइटी, एंड also we have to fulfill the needs of these people. If your client has a problem with ethic, अगर आपका क्लाइंट एथिकली गलत है और ऐसे लोगों के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में बहुत बड़े कोर्ट के अंदर केस के शिकार होने वाले हो। ऐसे लोग आप लोगों को लीगल तकलीफ में डाल सकते हैं। That is the biggest problem. So those who climb the corporate ladder of life, जो झूठी तरक्की करना चाहता है, गलत तरीके से तरक्की करना चाहता है, झूठ बोल के तरक्की करना चाहता है, वो आज नहीं तो कल बहुत ही बुरी तरह से गिरेगा और उसका करियर वहीं पे बिजनेस का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। उसमें हमने देखा बिजनेस एथिक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ जनरल एथिकल रूल्स एंड rules to business behavior. We also studied another definition, like business ethics or ethical standards are the principles, the practice, and philosophies that guide the business people in the today's business decision. Then we studied about what are the importance of the business ethics. हमने देखा it brings the positive consequences. Number 2, it creates the goodwill of the business and the businessman. Number 3, protection to both the sides. Number 4, creates the self-satisfaction. Number 5, bring the success and development. Number 6, stop the business malpractices. Number 7, improves the customer's confidence. Number 8, helps in survival of business. Number 9, safeguarding consumers' rights. Number 10, protecting consumers, employees, and shareholders. Number 11, develops the good relations. Number 12, creates good corporate image. Number 13, healthy competition. दोस्तों अभी ये यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टडी आज किया है, आप लोगों को होम असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट के फॉर्म में मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये पीपीटी में आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा असाइनमेंट क्या है। सो दिस 3 क्वेश्चन यू हैव टू नोट, राइट डाउन इन आंसर फॉर दिस 3 क्वेश्चन इन अ पेपर, एंड after writing this you have to do this, take a photo or you have to scan it in your mobile. After scanning it you have to send it to the mail id given. So what are the 3 questions? What are the 3 questions which we need to understand? Explain the meaning and definition of ethics. Next question, explain the meaning and definition of business ethics. And the third question is what are the importance of business ethics. उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जब आप असाइनमेंट करते हो, असाइनमेंट मस्ट बी हैंड रिटन, नंबर 1. नंबर 2, स्टूडेंट मस्ट मेंशन नेम, डिवीजन, प्रोग्राम. अभी आप लोग टीवाईएफएम के, आपको डिवीजन का कोई प्रश्न आता ही नहीं है. आपका नाम, आपका प्रोग्राम यानी कि नेम, टीवाईबीएफएम, सिग्नेचर आपका, तारीख जिस दिन आपने असाइनमेंट लिखा है, ऑन एवरी पेज ऑफ द असाइनमेंट. आपको असाइनमेंट के हर एक पेज के ऊपर आपका नाम, डिवीजन, प्रोग्राम, सिग्नेचर एंड डेट लिखना ही पड़ेगा. अगर आप ये असाइनमेंट लिख के उसमें किसी और को शेयर करते हो, फिर वो मुझे भेजता है, अगर तीसरे कोई पर्सन को शेयर करते हो वो मुझे भेजता है, तो वो चलेगा नहीं. देन आपको ये लिखने के बाद उसका स्कैन कॉपी आपको भेजना है ऑन DRV mahida@gmail.com, Dr. V Mahida @gmail.com on or before 18th June 2020. ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वीडियो, ये सभी चीज आपको मिल जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप लोगों को इससे आंसर बनाने में इजी होगा. आप लोगों को और भी मैं बताना चाहता हूँ, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हो, आप कोई टेक्स्ट मटेरियल की मदद ले सकते हो, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो उसकी मदद ले सकते हो. आपको एक अच्छा सा आंसर डेवलप करना है, और जो जो टॉपिक यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे लेक्चर्स में कंडक्ट किए जाते हैं, सिर्फ ये सब्जेक्ट के नहीं, दूसरे सारे सब्जेक्ट के आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी. एक बात तो आप मानते हो कि अभी जो एग्जाम कैंसिल हुई है टीवाईबीकॉम के बच्चों की, ऐसा अभी आगे नहीं होगा. आपका तो एग्जाम होने वाला है, और वो भी टाइम पे होने वाला है. और एक तरफ एग्जाम टाइम पे होने वाला है, और एक तरफ हमारा कॉलेज स्टार्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन. तो इस समय में आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन है
हम हमारे घर में बैठ के हमारे स्टडीज को प्रॉपरली जस्टिफिकेशन दे. सो आई होप टुडे सेशन यू ऑल क्लियर and everything is being I assume you understood. If you understood, then show your thumb to me. Show your thumb if you understood the session. Okay. If anybody has any question to ask, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अनम्यूट करने की. If anybody wants to speak, just raise your hand. ओके, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आज के टॉपिक में कुछ ऐसा नहीं समझा वैसा है, आप लोगों को दिए गए मेल आईडी पे आपका डाउट्स मुझ पे भेजना है एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बाय द नेक्स्ट डे. आपको आपका डाउट उस पे भेजना है एंड डेफिनेटली आई विल अलाउ यू टू आई विल गिव यू एन आंसर इन वन हैंड. ओके, आई थिंक सो आनंद कुमार माली वांट टू से समथिंग. You can unmute yourself and speak. Anand Kumar Mali, उसने हाथ ऊपर किया है. Would you like to say something, Anand Kumar Mali? Yes. One second, Anand. Yes, Anand, you can speak now. Hello, Anand. Okay, I think so. We are not able to hear Anand. Anand, no problem. So whatever doubt you people have, you can share it to me. And with this, I think so we'll end up with the session today. I think so in the beginning we had came across little problem of technical difficulties, but dear students, we are in the process of learning the things. Slowly we will come up. And I think so Chavan sir is in the meeting. So I will join and we'll discuss little bit more about the things. Okay. So still there are 5 minutes left to the meeting. I will. Anybody has any doubt to? No. Okay. So shall we end the meeting now? Yes.